जय श्री कृष्णा। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज हम कलर करेंगे ये क्यूट क्यूट बर्ड्स को। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आप अगर इसको कलर करते तो आप कौन कौन से कलर यूज़ करते? है ना क्यूट। ये मैंने मीशो से ऑर्डर करी है। अगर आपको ये लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसमें ऐड कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिली है मुझे। तो हम इनको कलर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट बर्ड जो मैंने कलर की है दैट इज़ अ मिक्स ऑफ ब्राउन कलर। ब्राउन को मैंने वाइट के साथ शेड किया था। कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड द सेकेंड बर्ड आई एम गोइंग टू पेंट विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Every stroke you can see how clearly I'm just painting it and how it is. Please do let me know in your comment. Now I'm going to use another color which is red. Now you will see what combination it is. It will look wow. I hope you all can see the difference with one color and two color mix, red and blue. Every single stroke you can see, and you can also give a try. You can also order it from the Meesho. I'm not doing any type of promotion here, but these cute little birds, I really have a good experience on through Meesho basically. Earlier I was not having this type of opinion for Meesho, especially because it I know Meesho took too much time for delivery, but for this birds I can see it's a great choice for me. Hope you all are enjoying this. So just look at the cute birdies here. Looking cute, na? Now I'm going to give a twist with Fevicryl molded. No, it's not molded basically. Fevicryl outliner. These are also a kind of Fevicryl colors only, but it comes in Fevicryl cone shape, so that we can do a little bit different kind of outlines basically. So you can check how it's going. Sometimes you may get a sturdy type of things, so you can use a safety pin, and you can clean the nozzles and then you can use it. So you can see कैसे यूज़ करना है इसको, एंड इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके हम इन क्यूट लिटिल बर्डीज़ पे अपने थोड़े से पैटर्न्स भी बनाएंगे दैट यू विल ऑल्सो लाइक. सो अभी ये आउटलाइन वाला फिनिश हुआ. वी आर गोइंग टू पेंट इट्स आईज. Now the middle part I'll do. See, it is stopping somewhere, right? बीच बीच में थोड़ा सा नोजल्स इसके ब्लॉक हो जाते हैं. दैट यू कैन फिक्स इट विद और यू कैन क्लीन इट विद सेफ्टी पिन्स बेसिकली. I'm just keeping it very simple.
putting it only dots. I'm just having a perception in my mind that I'm going to use different texture in pearls. Comment your favorite things so that I can pin it. And please, guys, comment, like, and subscribe also to support my channel. Thank you. Thank you.